अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री टीचर। और टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपाउंड्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिकैप के साथ। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया है बेसिक डेफिनेशंस, एंड उन बेसिक डेफिनेशंस में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. And now you all know that we can classify matter into two major groups, which are substances and mixtures. And in substances, we further divided into two groups, elements and compounds. In our previous lecture, we have discussed elements in detail, and in this lecture, we are going to start with compound. So, if we look at the word compound, so it means that made up of more than one things. So, in compounds, if atoms combine with other type of atoms, then it is going to form compound. So we can say that compounds contain more than one type of atom. And remember, when we say type of an atom, it means that they should have same atomic number. अगर हम इसकी मिसालों को देखें तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले भी कंपाउंड्स को दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है. कंपाउंड्स के दो तरह के मेजर ग्रुप्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो वो वाले कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कोई बॉन्ड बनाते हैं. यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स विच इज़ फ्रॉम द लिविंग ओरिजिन. लिविंग मैटर के ओरिजिन से जो कंपाउंड आते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं. और अगर हम कहते हैं कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, सो वी ऑल नो दिस, कार्बन इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. सो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग तरह के एटम्स मिलकर कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं. इसकी मिसाल है मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4, जिसका मतलब है कि देयर इज वन एटम ऑफ कार्बन एंड देयर आर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, one atom of carbon is surrounded by 4 atoms of hydrogen, and if you will look them all together, you will see 2 different types of atom, right? One is hydrogen and other is carbon. So if 2 different types of atoms they are combined together, you will name it as compound. अगर हम देखें दूसरी तरह के कंपाउंड्स को जो कि हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर there is no carbon hydrogen bonding. So other than carbon hydrogen bond, the compounds they are called as inorganic compounds. For example, the very common example, water, H2O, it is having 2 different types of atoms which are hydrogen and oxygen. So these 2 different types of atom they are combined together to form one molecule of water. Yes, 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom. And you can see that between these 2 things there is a bond. Yes, there is a chemical bond which is holding them together. So if we look into the exact definition of compound, so compound is a substance made up of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Means this definition is having 2 major components. One is these 2 or more substances must chemically combined and they should have a fixed ratio by mass. तो इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन. When we say chemically combined, तो इसका मतलब है कि उसके एटम्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन या फिर उनके इश्तराक या फिर शेयरिंग का कोई ना कोई रिलेशन मौजूद है. केमिकल बॉन्ड सिर्फ उसी वक्त वजूद में आता है जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे या फिर गेन या लूज करे, जस्ट टू गेट देम स्टेबल, जिसको हमने डिस्कस किया अपने वैलेंसी वाले चैप्टर में डिटेल में. सो एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन व्हाट हैपन्स, बेसिकली द एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज. यस, वो पहले की तरह नहीं रहते. दे विल फॉर्म टोटली अ न्यू कंपाउंड, totally a new substance which is having properties exactly different from the components that would join together to make that particular substance. थोड़ा सा confusing हुआ, इसको समझते हैं एक मिसाल के तौर पे. जैसे कि हमारे पास है सबसे इजी मिसाल वाटर की. जब पानी बनता है तो बेसिकली इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 gases. Yes, 2 gases. I said gases. Water is in liquid state, right? But it is formed by 2 gases, hydrogen and oxygen.
these two gases, they have different properties. They have different chemical properties. They have different physical properties, right? But when we look into water, it is having properties entirely different of the components. Yes, this is what exactly happens when there is a chemical combination. During a chemical change, when chemical bonds are formed and there is a chemical combination, entirely new things are formed, which are having properties opposite of the properties of the components. For example, एक और मिसाल लेते हैं, sodium chloride. It is a chemical formula for table salt. Table salt, table का salt नहीं, it's the salt that you use at your home, जो कि हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं. Its formula is NaCl. Na stands for sodium. It's the symbol for sodium. Remember, it is from the Latin word sodium, natrium. And Cl stands for chlorine. So when sodium and chlorine, they both combine together, so they give us a salt, which is sodium chloride. It's a white crystalline salt. But you will be amazed if I'll tell you properties of sodium and chlorine. Sodium is a metal. Yes, it's a metal. It's a soft metal, brown colored metal. And chlorine is a poisonous gas. Yes. So a metal and a gas, they're going to combine together chemically and then they will give us sodium chloride, which is table salt. So isn't it having entirely different properties from the components? Yes. So you have understood this with the help of example. So in water, entirely new compound is formed when you will mix hydrogen and oxygen. And in case of sodium chloride, it's entirely a new thing having new properties rather than the properties of sodium and chlorine. So we can say that compounds cannot be broken down into their constituents by simple physical methods. Yes, constituents means the components which are going to combine together to give you that compound. मतलब जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो constituent होंगे सोडियम और क्लोरीन. So इस फ्रेज का मतलब ये है कि अगर आप कोशिश करें कि कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग हासिल कर लें तो ये मुमकिन नहीं है. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहें कि आपके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं है लेकिन पानी तो है, तो क्या आप पानी से ऑक्सीजन निकाल के सांस ले सकते हैं? यकीनन ये मुमकिन नहीं है. Because water is having different properties and water is the chemical combination of oxygen and hydrogen. So we cannot separate them by physical methods. So let me elaborate physical methods to you a little bit. Physical methods mean, for example, by hand picking something or things or the processes which involve physical change. For example, boiling, for example, melting, for example, condensing or such things like the simple processes involved in change of the physical state. Fine. So we cannot separate compound into its constituents by simple physical methods, but yes, you can separate them by chemical methods. Means अगर एक चीज chemically combined है तो उसे तोड़ने के लिए भी आपको कोई chemical process ही use करना पड़ेगा. So I hope this thing is clear to you. Let's move on to the second part of the definition, which was the components should have a fixed ratio by mass. Yes. So first understand the term mass. Mass मतलब कोई चीज़ कितनी heavy है या उसका कितना weight है. So अगर compound दो या दो से ज़्यादा constituent से मिलकर बनता है तो यकीनन उन चीज़ों की कोई ना कोई mass ratio होगी. मतलब उनकी contribution उस compound को बनाने में कुछ अलग होगी यकीनन. So अगर हम बात करें compounds की तो compounds बनते हैं atoms से. Yes, atoms से. तो एटम्स का मास हमें पीरियोडिक टेबल में मिल जाता है. हर एटम जो कि अभी तक डिस्कवर हुआ है, साइंटिस्ट ने उसका मास डिस्कवर करके उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर दिया है. सो इफ यू वांट टू नो मास ऑफ समथिंग यू विल लुक इनटू द पीरियोडिक टेबल. देखते हैं कि फिक्स रेशो बाय मास किस तरह होती है और इन कंपाउंड्स के अंदर. जैसे कि अगर हम मिसाल लें कार्बन डाइऑक्साइड की, एज यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज हैविंग CO2 formula, means one atom of carbon and two atoms of oxygen. And remember, it's a compound, so these two things, they are chemically combined together. Now, if you will look into the periodic table to find the mass of carbon, it is 12. And if you will look into the periodic table to find the mass of oxygen, it is 16. So in CO2 or carbon dioxide, since carbon is 1, so mass of carbon is
12 means 12 multiplied by 1, it should be 12. And in case of oxygen, since we have 2 atoms of oxygen, so 16 was for 1 atom. So 16 multiplied by 2 is the mass of oxygen which is present in carbon dioxide. So mass of carbon is 12. Mass of oxygen is 16 multiplied by 2, 32. So we can say that the ratio of mass of carbon to the ratio of mass of oxygen is 12:32. So this is a fixed ratio. अब आप कहेंगे ये तो किसी में भी हो सकती है, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे हो सकता है वो किसी और रेशियो से मिले। जैसे इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन is 12 and oxygen, the mass of oxygen of course, it's 16. तो क्या ये दोनों सेम हुए? क्या ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास है? So in carbon dioxide there were 2 atoms of oxygen and in carbon monoxide we have only 1 atom of oxygen. तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं। सिर्फ और सिर्फ मास में डिफरेंस होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड is a poisonous gas. It's dangerous for us. And carbon dioxide is not. It is used by the plants to make food. So fixed ratio by mass is very important. आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बने हैं। Yes, in all these compounds you can see nitrogen and oxygen, but do you think all of them are same? No, their number of atoms are different. Their ratio of combining the atoms is different. So their fixed ratio by mass is different as well. If there is one compound, for example water, for example carbon dioxide, for example carbon monoxide, so all of these compounds, they are having fixed ratio by mass. So I hope the definition is complete now and you have completely understood what is the meaning and what is the definition of compound and why do we need these two important parts of this definition. अब चलते हैं compounds की classification की तरफ. Generally compounds को classify किया जाता है उनके chemical combination के according, like which process they have used to chemically combined together. Yes, थोड़ा सा मुश्किल लगा, अभी इसको आसान कर लेते हैं. प्रोसेस मतलब हमने पढ़ा अपने वैलेंसी वाले टॉपिक में कि एटम स्टेबल होने के लिए 2 काम कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है. तो ये 2 मुख्तलिफ तरह के तरीके हैं, एक जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. सो 2 मुख्तलिफ तरह के तरीके से अगर कंपाउंड्स बनेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा. तो अगर कोई शेयरिंग से कंपाउंड बनता है तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड, और अगर कोई गिव एंड टेक या गेन और लूज से बनता है तो उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड. अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो आयोनिक कंपाउंड कभी भी मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. दे फॉर्म अ 3-dimensional क्रिस्टल लैटिस. यस, ये उनके स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, ये उनके स्ट्रक्चर के लिए एक स्पेसिफिक उन्हें नाम दिया जाता है विच इज क्रिस्टल लैटिस, इन विच होता क्या है, each ion is surrounded by oppositely charged ion. Look at this diagram. Can you see any specific part of this compound? Can you see any unit of this compound? You can see it as a whole. आपको 2 डिफरेंट तरह के एटम्स नजर आ रहे हैं, सोडियम क्लोरीन, मगर आप इन एटम्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हैं. तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, और इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सोडियम एटम सराउंड है क्लोरीन एटम से, और अगर आप नजर डालें एक क्लोरीन एटम के ऊपर तो वो सराउंड है बाकी के सोडियम एटम से. क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज एंड सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑपोजिट charges always attract. So due to these attractions, what happens? Due to these attractions, basically there is a force which is called as electrostatic force, so which is going to hold these positive and negative charges together in a shape which will form crystal lattice. और इस केस में हम इसके फॉर्मूला को मोलेकुलर फॉर्मूला नहीं कहेंगे क्योंकि हमें इसमें मॉलिक्यूल नजर नहीं आ रहा. We are going to call it as फॉर्मूला यूनिट्स, क्योंकि हम सिर्फ इसमें एक यूनिट को एज्यूम करके बता सकते हैं कि हाँ इस स्ट्रक्चर में सोडियम और क्लोरीन वो आपस में अटैच हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स की वजह से, तो इसको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है। इसके अलावा पोटेशियम ब्रोमाइड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब देखें कंपाउंड्स की अगली टाइप की तरफ, तो वो हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स। और कोवलेंट कंपाउंड्स मतलब जिसमें हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर गोइंग टू फॉर्म molecules, yes, and molecules are the smallest part of any given compound. Yes, students, atoms are not the smallest part of a compound. Why? Because atom means single thing, and compounds are always formed when two or more atoms, they are going to combine together chemically. So in covalent compounds, a molecule is a true representation of a covalent compound, and its formula is called as molecular formula. For example, water H2O, hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, all of these are covalent compounds. आपकी बुक के टेबल 1.3 पे कुछ some common examples given हैं compounds की with their formula. So आपको याद करने हैं ये सारे formulas, क्योंकि ये आपके अगली आने वाली केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि water H2O, sodium chloride, which is common salt, table salt, NaCl, silicon dioxide, SiO2, sodium hydroxide, which is caustic soda, NaOH, and many more. So I hope that you are going to learn compounds in detail at home, and you are going to learn this table as well. So dear students, आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया टॉपिक कंपाउंड्स, एंड वी नो दैट कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस। यस, इट्स अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। और आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस की डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड और उस डेफिनेशन के कंपोनेंट्स इन डिटेल। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड विच इज आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। अपने आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मिक्सचर्स इन डिटेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।